Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. You can call us on 2331-4444, 2371-7106, 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Ambarish Saxena. नमस्कार आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं वी रवि कुमार। Prime Minister Narendra Modi expresses pride that country's number of unicorns hits a century, informs that total valuation of unicorns reaches over 25 lakh crore rupees. Monsoon reaches Kerala today, 3 days ahead of normal date of onset, and 3 IPOs to debut on stock markets next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 से अधिक हो गई है, जिनका कुल मूल्य 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 3 दिन पहले आज केरल में पहुंच चुका है और शेयर बाजार में अगले सप्ताह 3 आईपीओ आएंगे। Prime Minister Narendra Modi today expressed pride that the number of unicorns in the country has reached 100. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program in the 89th edition on All India Radio, Modi said the total valuation of these unicorns is more than $330 billion, which amounts to more than 25 lakh crore rupees. A unicorn is a startup worth at least 7,500 crore rupees. Mr. Modi said 44 unicorns came up last year and 14 more were formed in 3 to 4 months this year. He stated that even during the pandemic, Indian startups have been creating wealth and value. The average annual growth rate of Indian unicorns is more than those of the US, the UK and many other countries. The Prime Minister pointed out that Indian unicorns are diverse and operating in many fields such as e-commerce, fintech, edtech and biotech. He happily noted that India's startup ecosystem is not limited to just big cities, but entrepreneurs are emerging from smaller cities and towns as well. He said that this shows that in India, one who has an innovative idea can create wealth. The Prime Minister emphasized that right mentoring is very important in the startup world. He said a good mentor can take a startup to new heights and guide the founders towards right decisions. He said there are many such mentors in India who have dedicated themselves to promote startups. And the first caller of this edition of Market Mantra is Prateek from Delhi. Prateek, welcome to Market Mantra. Prateek, you're live. You can put your question. Okay. Actually, my question is basically, what is the duration of mutual fund we have to invest for a longer duration at a better return? Equity or debt, Prateek? Yeah. Equity, okay. So you should have a minimum time frame of 5 years to have a because my threshold, my essential expectation from a mutual fund. Investing in an equity fund will be that you are able to beat inflation. You are able to beat the risk-free return. I would say what you get in State Bank on a 5-year deposit, which is available to every Indian. So to be able to beat these two, I think, and of course, also to be able to beat the benchmark. If you invest in the Sensex, that is the option which is available to you as an index fund with very low cost.
So if you do if these three are my base benchmark, then 5 years time frame, regular investment makes it happen mostly. Right. The next story that we are tracking comes right from the northeastern part of India. The Union Minister for Finance, Nirmala Sitharaman, said that the central government is focusing more on funding and infrastructure development in the entire northeastern area for better connectivity. The finance minister informed that the centre is giving emphasis on development of national waterways in the country for their immense possibilities. The government is also developing the infrastructure of waterways for seamless connectivity, as waterways can provide cost-effective logistics services. The Union Minister was addressing the valedictory session of the third Natural Allies in Development and Interdependence, or NADI, 2022 conclave in Guwahati today. Mrs. Sitharaman said that northeastern states are the gateway to the entire Southeast Asian region, and better connectivity can bring greater tourism and commerce in this region. Ms. Sitharaman said that Government of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi is fully committed towards the neighbourhood first and Act East policy. We have Mr. J.S. Saluja from Delhi online with us. Mr. Saluja, welcome to Market Mantra. Please put your question. Mr. Saluja, we can hear you. You're live. Please put your question. Mr. Saluja, are you able to hear us? I think Mr. Saluja, Hello. Mr. Saluja, you can put your question. You're live with us. My question is very simple. How can we exit from NPS fully? 25 years of service has already been done. Are you a government servant or is it the private NPS? We have lost. Yeah, go ahead. You can't exit NPS fully. Yeah, he wants to exit NPS fully. You can't exit NPS fully. You have to buy, the prevailing rule is that 40% of all the accumulation should be, one has to buy annuity. Okay. Let's remind all our listeners that Dhirendra is live with us and answering all questions that you might have about mutual funds. So don't hesitate. This is a great opportunity for you. The numbers on which you can call us are 2331-4444, 2371-7106, 2371-7117. और चलते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 3 दिन पहले आज केरल में पहुंच चुका है। राज्य में आमतौर पर मानसून 1 जून तक दस्तक देता है। इससे पहले मौसम विभाग ने 27 मई को मानसून आने की भविष्यवाणी की थी। केरल के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। केरल में बिजली चमकने और गरज के साथ मानसून से पहले की वर्षा से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा हाल के महीनों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। और नोएडा से हमारे श्रोता SPS जैन जी मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी जैन साहब, सवाल पूछिए। नंबर आ गया मेरा? जी सवाल पूछिए। नमस्कार जी जैन जी। नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि अभी आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए मिनिमम होराइजन 5 साल होना चाहिए जी। तो अगर मेरा टारगेटेड रिटर्न इससे पहले मिल जाता है तो क्या जो 1 लाख रुपए का टैक्स कंसेशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर, उसको नहीं लेना चाहिए? वो एक अलग चीज है कि आप जो टैक्स की छूट आपको मिलती है उसके लिए आप, वो एक टैक्टिकल चीज है कि आप अपना टैक्स का बिल कम करना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने मुनाफे को हर साल आपका एंटाइटलमेंट है कि 1 लाख रुपए तक के मुनाफे को टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो आप इतना रुपया आप डिसइन्वेस्ट करेंगे ताकि 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो जो हर साल छूट मिल जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन 5 साल में आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। कम से कम इतनी अवधि आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक जो आपके लिए डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। The next caller is from Delhi. Nand Gopal is online with us. Nand Gopal ji, welcome to Market Mantra. अपना सवाल पूछें। थैंक यू। मेरा धीरेन्द्र जी से क्वेश्चन है कि LIC म्यूचुअल फंड भी कंडक्ट करती है, तो इसके जो इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट से क्या प्रोस्पेक्ट है? थैंक यू। ये बहुत ही देश के सारे निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि LIC का प्रोस्पेक्ट क्या है।
हर एक को लग रहा था, मुझे बल्कि कुछ लोग मेरे यूजर्स या मेरे रीडर्स शिकायत भी कर रहे हैं कि मैंने सफाई से लोगों को नहीं बताया था कि LIC में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए कम डिस्काउंट से शेयर मिला, उसके बावजूद उन्हें नुकसान हुआ है। मैं एक दो तीन चीज बता दूं जो कि अभी भी बहुत ही अनक्लियर है कि LIC की जो स्ट्रेंथ है वो इम्पेकेबल है। अब वो कोई मैच नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बहुत सालों तक रहेगी, बहुत मुनाफा कमाएगी। इसके स्केल को मैच करना असंभव है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ। और LIC का जो डिसएडवांटेजेस है कि एक सरकारी कंपनी है, इसको हमें जो प्राइवेट सेक्टर के 4-5 लीडिंग प्लेयर हैं वो अपने बिजनेस का रूल सेट कर रहे हैं। LIC का अधिकतर बिजनेस लेगेसी बिजनेस है। ये अभी इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस बेचने के बजाय यूलिप्स और एंडाउमेंट प्लान्स और उन चीजों पे इनका फोकस ज्यादा है। तो वो रूल से सेट करते रहेंगे। और अभी ये देखना होगा, और एक जो सबसे बड़ा वेरिएबल है कि LIC का डिसइन्वेस्टमेंट अभी कई सालों तक जारी रहेगा और इसका प्राइस डिस्कवरी अभी हुआ नहीं है। सरकार केवल 3.5% इक्विटी बेच पाई है और सरकार की मंशा है, और जो सरकार ने क्लैरिटी से बताया है कि 49% इसका इक्विटी बेच सकती है, 51% हमेशा रिटेन करेगी। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में अगर किसी को पता हो कि भारत सरकार इसकी हमेशा एक डोमिनेंट ओनर रहेगी, वो अपने आप में एक बिजनेस एडवांटेज है जो कोई और कंपनी मैच नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद आने वाले कई सालों तक अभी LIC का इक्विटी बाजार में बेचती रहेगी। और शायद यही कारण है कि इसके सारे स्ट्रेंथ के बावजूद इसका दाम कोई खास नहीं है या लो डिस्काउंट पे खुला है। जबकि मेरा भी अपना मानना है कि ये अगर केवल नंबर के टर्म्स में देखा जाए तो ये एक रीजनेबली प्राइस्ड शेयर था, बहुत अग्रेसिवली प्राइस्ड इसको ये IPO नहीं था। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको समरी में ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। और दिल्ली से हमारे श्रोता RS दहिया जी लाइन पे मौजूद हैं। दहिया साहब अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज। हाँ अभी कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी दहिया साहब सवाल पूछें। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से ये है कि व्हाट इज फ्रॉड हैज हैपेंड इन एक्सिस म्यूचुअल फंड, will it affect the Axis blue chip fund growth scheme or it will not affect in any way? Second is, in future, how a common investor can guard against such frauds so that he is not put into financial problem? And third is, what is the gain of the listing of LIC shares in the market after the IPO? Your last factual thing, LIC shares are trading at a discount to the IPO price, and people are somewhat disappointed. Not a huge discount, but if they've gradually below its IPO price. About the Axis episode that has happened, apparently looking at things, because the funds which were affected by the misbehavior of the fund managers which have been mentioned are not the old fund. They are fixed fund. They are relatively smaller fund. They are ETFs and things like that. Relatively newer, smaller funds. But this is quite scary. This is extremely disappointing because normally the thinking is that it's more of a, you never have one cockroach. You have you only see one. So in that sense, that is scary. The way to actually protect is that you can't protect it. The regulators have to protect us from this. They are supposedly very well regulated. I think regulators have gotten into act to hold people accountable. We have to see what happens if somebody is able to measure what is the scale of loss caused on account of their behavior. Investors should be compensated even if we don't know clearly what has happened, and it should be setting a standard that for anybody to misbehave in the future. Third thing that most investors should always do is that they should diversify. If you have substantial amount of money invested in mutual fund, which I think is a good thing,
and which one should, because you get quick diversification and you are able to get good management, and some of these funds have excellent track record. Make sure that all your money is not because when I see real investors in portfolios, I find that many a times they are very heavily tilted, 60, 70, 80% money invested in one fund company. Don't do that. Make sure that you never exceed. The moment your money scale goes beyond something which becomes, you can say that it is substantial and your future financial security will depend on that. Make sure that it is not exceeding 25% or 20% in a single AMC. Dhirendra will continue taking questions on mutual funds and related issues on Market Mantra, but before that, let's take a small commercial break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra. We are taking questions on mutual funds and related issues, and Dhirendra is live with us. Ashish from Kolkata, you can go ahead and ask your question to Dhirendra. आशीष जी हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें। Yes, I'm from Kolkata speaking. बोलिए आशीष जी। Regarding my mutual fund and State Bank hybrid mutual fund. Yeah. What is your question? I have already invested since 2 years. It has been since 2 years, but the gain is not so much. Okay. Okay. What? Are you in losses? Is there any? Hello. Yeah, go ahead. What's your question, Ashish ji? I think we've lost him. We don't know how much he meant by gain is not enough. I don't know how much is enough, but what would you like to advise him? No, I would like to advise him that, this is a good fund, and maybe it has not been substantial, but, last 1 year it is up 8%, last 2 years, it's, 3-year annualized return is about 12%, which I think is not all that bad given the context of the market. So I would say that he should hold on. This fund has been reasonably impressive on the downside, when it comes to the decline. Of course, except most funds fell very dramatically in 2020 in the month of April. But it made a major comeback. It has been able to go guard the downside. He should hold on. If he doesn't need the money, with this is almost like an equity fund, a steady equity fund for a first-time investor. It's a good fund. And he should hold it for at least 5 years. The first question which I got, that what should be the time frame of investing in an equity fund? Yeah. It should be 5 years. Mr. Jay Saluja is again live with us. He had asked about exit in an NPS earlier. Mr. Saluja, go ahead. What's your question now? I have to ask again, because my question was, what is the procedure from getting out of NPS, which is one of the most inferior scheme in India? And the agents trap you like anything, and then if you cannot come out of it, then what is the point of getting into it? But NPS is not done through agents, Saluja sir. Thank you, sir. Okay. Actually, you can go to NSDL website and you don't need to go to an agent. National Pension System, you can pull out. In fact, now I remember that, it is in one case you can take 100% of your accumulation. If your accumulation is less than 5 lakh rupee on your superannuation. Otherwise, you can take 60% of your money, and 40% of the money NPS doesn't give you to in your bank account, but that goes towards buying annuity from an insurance company. And most of these things can be, substantially done online with NSDL. You don't need to go to an agent. और दिल्ली से हमारे श्रोता विनोद लाइन पे हैं। विनोद नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार, पूरी टीम को मित्र नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं धीरे जानना चाह रहा हूँ कि मैं एक लंबे समय थोड़ा एक घर लेने की सोच रहा था, लेकिन उसके लिए जो मैंने कैपिटल इकट्ठा किया है और अभी SIP भी चल रही है,
उसकी तो वैल्यू कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और जहां मैं घर लेना चाहता हूं वहां की इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इस समय में मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? और एक दूसरा सवाल है, एक कोटक फ्लेक्सी कैप के बारे में क्या हम कहेंगे, क्योंकि जो कैटेगरी में अपने में क्या कहाँ पे वो स्टैंड करता है, प्लीज। पहले सवाल का मेरे पास आसान जवाब नहीं है। आप देखिए कि आपका कम से कम जो आपका जो एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क होगा, मेरे हिसाब से एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जो कि आपको मकान खरीदने के समय करना चाहिए कि कम से कम 20%, 25% उस मकान का पैसा आपके पास एक्यूमुलेट हो जाए, बाकी पैसा आप भले ही लोन लें। और जो पैसा लोन लेंगे आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए, वो जो EMI है वो आपकी आमदनी का एक बहुत सब्सटेंशियल भाग नहीं हो, 1/4 या 1/3 से ज्यादा नहीं हो। और ये जो आप स्थिति बता रहे हैं कि आपका पैसा कम हो रहा है और आपका मकान का पोटेंशियल वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आप देखिए कि ये जो आप 2-4-5% का, अगर आप 25% इकट्ठा कर रहे थे तो 20% कंट्रीब्यूट करके ही इसको कर दीजिए, क्योंकि मकान एक ऐसा लोन है जो कि जस्टिफाई होता है, एक अकेला लोन जो कि जस्टिफाई होता है, जिसके लिए लोगों को लोन देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अप्रिशिएटिंग एसेट है। दूसरा, जो इमोशनल कंफर्ट लोग डिराइव करते हैं मकान खरीदने की वजह से कि चलिए एक शेल्टर हो गया, वो एक बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन फाइनेंशियल रीजन है। और इसके अलावा तीसरा जो फाइनेंशियल रीजन है कि किराया बचना शुरू होता है अगर आप किराया दे रहे हैं। तो इन सब चीज को नजर में रखते हुए अगर ये इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़े, पर देखिए कि मकान खरीदने के लिए और दो ही तरीका है, एक तो कि आप वो थोड़ा ज्यादा बोरो करने के लिए और थोड़ा कम कैपिटल लगाने का करें, या फिर थोड़ा छोटा घर लें। Dhirendra, many people are hesitant to sell in a down market. Should they consider something like loan against securities in such scenarios? No, not really, because he's actually going to borrow money to put money as a down payment on which he will be, it amounts to borrowing money. It is almost like borrowing money to invest so that you can profit from the gain, which is a very unusual risk to assume. Okay. Our next caller is from Thane. Vijay Kumar is on live with us. Vijay Kumar, what's your question? विजय जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछें। हाँ विजय, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था, ये ICICI प्रू बिजनेस साइकिल फंड के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? ये एक ऐसा फंड है जो कि साइक्लिकल, बहुत सारे बिजनेस है जो कि स्टडी तरीके से, जैसे कंज्यूमर कंपनीज है, स्टडी तरीके से बढ़ते हैं, या टेक्नोलॉजी कंपनीज भी भारत में अभी तक वो ऑलमोस्ट नॉन साइक्लिकल बिजनेस की तरह माना जाता है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस है जो कि साइक्लिकल है, मेटल बिजनेस है, या जो इकोनॉमिक साइकिल को राइड करते हैं, और इस तरह की कंपनियों में ये पैसा लगाता है। और एक समय था जब ये फंड लॉन्च हुआ था, उस समय ऐसी कंपनियां कंप्लीटली आउट ऑफ फेवर थी। ये कंपनियां बहुत ही बाजार में उस समय कोई इसमें पैसा नहीं लगा रहा था, और ये काफी कम दाम में उपलब्ध थी। और हाल फिलहाल देखा जाए तो ये एक बहुत आम सा फंड दिख रहा है। कहने को यह बिजनेस साइकिल फंड है, इसके पोर्टफोलियो को देख करके ये एक बहुत रेगुलर सा फंड है जिसमें कि हर तरह का चीज है, वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। कोई एक आध सेक्टर की यहाँ कमी दिखती है कोई, लेकिन वो भी कोई खास नहीं है। फाइनेंशियल्स में काफी पैसा लगा हुआ है, एनर्जी कंपनी में भी लगा हुआ है। तो उस नजरिए से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की कमी है। तो ये कोई बहुत बार फंड बनाए जाते हैं ताकि लोगों को लुभा सके, लोगों को एक कहानी बताया जा सके, और एक कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह फंड बेचा जाता है। अभी ये फंड एक आम डाइवर्सिफाइड फंड दिख रहा है। Our regular caller SPS Jain had asked a question about tax issues, about trying to do the tax farming that people do with that 1 lakh limit. But there are other issues also regarding tax, whether you do an STP, there are some tricky tax issues that come there, or else people wanting to move from regular to direct, or people who have been in a fund which has not been performing well, wanting to sell and move on to a better performing fund. You have to pay taxes. Shouldn't there be some proposal whereby if you reinvest your proceeds
back into a fund, a similar fund, such tax should not be applicable. Is there such a proposal on the anvil? No, there is no such proposal, and there is unlikely to be one. But I'll tell you, there is a possibility. You can actually attempt it in a limited bid. There is something called Nps Tier 2, which has an equity fund, which has a bond fund. So if you are actually investing there, and you can take your money out whenever you want to from the Tier 2. The Tier 1 is your retirement account, of which you can't take more than 60% on your superannuation. So that is a place where you can move your money back and forth, and you are not liable to pay taxes. Only when you take it back is that you are liable to pay taxes. All right, let's look at the third story that we are tracking in this episode of Market Mantra. Shares of 3 companies which launched their initial public offer or IPO recently will list on the stock markets next week. The first listing will be of Ethos on Monday. Ethos is a luxury watch retailer. This will be followed by eMudra on Wednesday. eMudra is a certifying agency that issues digital signature certificates. The last IPO to list on the stock markets is of Ether Industries, a specialty chemicals player that will make a debut on Friday. So these are the stories that we have tracked. Dhirendra, there are a couple of questions that had come, and a lot of people these days are trying to look at the passive funds. And I was just reading an article in a newspaper that passive fund inflows has grown by almost 90% in the last 1 year. So if someone is planning to invest, as you said, typically over at least a 5-year period, does it make sense, especially in large cap funds, to largely go with passive funds, or is there still some alpha, something extra that other fund managers can give? I think, when you're investing in equity and you want to keep it simple, you don't know which fund to choose, you're getting confused. It is better to start with, any fund, whether it be a hybrid fund, whether it be a tax-saving fund, or even an average equity fund, because I think one should look at the kind of hurdles. People are scared of investing in equity. People are get started. I think not too many people invest in equity. Index fund is a good way to start if you are. The decision making of an actively managed fund is very difficult. Which one? Which category? Which type? Growth or value? Which ones? And then on top of it, we just got the question, business cycle fund. Likewise, there will be 50 other funds, and people will be attracted to something which has done exceptionally well. So get started somehow. Start with a hybrid fund if you're a first-time investor. If you want to invest in equity, unable to choose, start with a tax-saving. With this one, we have with an index fund. It is gaining popularity. But I don't think, the popularity of index fund actually hides quite a bit, in a sense that the largest index fund, it has happened because Employee Provident Fund organization has decided to start investing in equity. And their vehicle of investment in equity in India happens to be an index fund. And that is why the index fund has become the largest Indian equity fund in the shortest time period, entirely because Indian citizens investing, deduction going into EPFO has started investing in equity. So Dhirendra is basically suggests there's a saying in Hindi, na mama se kana mama acha. So don't agonize over which fund to invest in. Start investing. Starting is very important. Investing. That is most important. Okay, one more question which Mr. Jain was asking, and I think it got lost in our too many questions. I think धीरेन्द्र जी आज समय का अभाव है, हम अगले कार्यक्रम में इस सवाल को लेंगे. सो इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद. Thank you, Dhirendra, for taking the questions live on this edition of Market Mantra. Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi expresses pride that country's number of unicorns hits a century. Informs that total valuation of unicorns reaches over 25 lakh crore rupees. Monsoon reaches Kerala today, 3 days ahead of the normal date of onset. And 3 IPOs to debut on stock markets next week. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.